So hello everyone. So welcome to the class of S.education. So आज आम डिस्कसन करिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो इम्पोर्टेंट पार्ट्स. तो होप करूँ समस्त को भल लगे. जदि भी भल लगुच देन चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक कर दे एवं शेयर करंतु. So let's start the class. The first question देला the union and its territory. Which part of the constitution deal with the union and its territory? That is part 1. So part 1 आमर कौन कौची ना यूनियन एंड टेरिटोरी. तो ऑप्शन ए है करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देला आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू. सो आर्टिकल 3 आमर कौन कौची ना फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कौची आमर आर्टिकल 3 एवं एटा पार्ट केते रे अछि ना पार्ट 3 रे अछि. दैट इज पार्ट 3. ऑप्शन सी है करेक्ट. क्वेश्चन देला व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप. सो को पार्ट आमर सिटीजनशिप रही. सिटीजनशिप को पार्ट रे ना पार्ट 2 रे रही. सो पार्ट 2 रे आमर सिटीजनशिप रही. दैट इज ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देला आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद. तो आर्टिकल 5 रु 11 जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सॉरी जो पार्ट आर्टिकल अच्छी से कौन डील करुच्ची ना. सो 5 रु 11 आमर डील करुच्ची सिटीजनशिप. सो सिटीजनशिप दैट इज ऑप्शन सी है करेक्ट. क्वेश्चन देला फंडामेंटल राइट्स आर कवर अंडर आर्टिकल्स. सो फंडामेंटल राइट्स आमर को आर्टिकल अंडर अच्छी आर्टिकल 12 रु 35. सो आर्टिकल 12 रु 35 फंडामेंटल राइट्स अच्छी. आर्टिकल 36 रु 51 हो डीपीएसपी. आर्टिकल 52 रु 152 रहा कौन दैट इज सॉरी 52 रु 151 कौन कौन ना यूनियन गवर्नमेंट. कौन कौन यूनियन गवर्नमेंट. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेंशन इन द आर्टिकल 32. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 अच्छी. दैट इज ऑप्शन सी है करेक्ट. सो देला डीपीएसपी और कवर्ड अंडर द आर्टिकल. तो डीपीएसपी को आर्टिकल आमर अच्छी. सो आर्टिकल 12 रु 35 कौन रहा फंडामेंटल राइट्स. 36 रु 51 दैट इज डीपीएसपी. ऑप्शन बी हवा करेक्ट आंसर. तो आर्टिकल 52 रु 151 कौन रोचे यूनियन गवर्नमेंट. आर्टिकल 243 टू 243 ओ कौन रोचे पंचायत राज. तो ऑप्शन बी हवा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन दिला व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन. सो को आर्टिकल आमर स्टेट को एड्रेस करे कि फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन देवाई चिल्ड्रेन मानू. तो छोट छुआ मान फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन देवाई आमर को आर्टिकल रे कहुई अच्छी. दैट इज आर्टिकल हम जोटा कि डील करुच्ची कौन ना फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन. तो जी छुआ अच्छा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिज्व अप टू द एज 14. तो 14 वर्ष पर्यंत जी भी चिल्ड्रेन अच्छा मागणार शिक्षा प्रदान करा जीवो. एवं ये जो आर्टिकल 45 थिला जो कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन ये आमर कौन होता ना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे चेंज होगी जोड़ा होता कौन आर्टिकल 21 ए जोटा कि राइट टू एजुकेशन होता. देखी आमर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह होता जो आर्टिकल 21 ए आड होता जोटा कि राइट टू एजुकेशन बोली कहुला जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिज्व अप टू द एज ऑफ 14. फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट. तो फंडामेंटल ड्यूटी को अमेंडमेंट द्वारा एड होती. दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा होती एड. दैट इज ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दिला हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी आम 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी. सो 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी आमर. तो सेटा कौन कौन आमर अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ा. व्हिच पार्ट डील्स विद द यूनियन गवर्नमेंट. तो को पार्ट आमर यूनियन गवर्नमेंट डील करुच्ची. तो आमर पार्ट 5. सो ये पार्ट 5 आमर डील करुच्ची दैट इज यूनियन गवर्नमेंट. तो ये ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर. पार्ट 4 कौन कहूँ पार्ट 4 हो डीपीएसपी.
पार्ट 6 कौन कहूँ द स्टेट्स तो ये स्टेट्स विषय कहूँ पार्ट 6 रे पार्ट 7 कौन कहूँ सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स तो जो स्टेट्स और यूनियन भितर जो रेवेन्यू रोचे डिस्ट्रीब्यूशन आमर पार्ट 7 रे रही नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशनड अंडर व्हिच आर्टिकल तो प्रेसिडेंट आमर को आर्टिकल अंडर अच्छा प्रेसिडेंट दैट इज आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 52 रे आमर प्रेसिडेंट अच्छा तो ये ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर आर्टिकल 54 रे कौन कहूँ ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कहूँ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 कौन कहूँ ना काउंसिल मिनिस्टर कौन कहूँ काउंसिल मिनिस्टर आर्टिकल 79 कौन कहूँ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 79 तो ये आर्टिकल 52 है आमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड गवर्नर ऑफ स्टेट तो को आर्टिकल आमर गवर्नर ऑफ स्टेट प्रोवाइड करे ना आर्टिकल 153 सो 153 आर्टिकल आमर गवर्नर को प्रोवाइड करे नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट लेजिस्लेचर आर डील विथ व्हिच स्टेट पार्ट सो आमर स्टेट लेजिस्लेचर तो स्टेट लेजिस्लेटर पार्ट 6 रही तो स्टेट लेजिस्लेचर आमर पार्ट 6 रे अच्छी करेक्ट आंसर पार्ट 5 रे कौन अच्छी पार्ट 5 पार्ट कंट्रोलर तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तापर पार्ट 9 रे कि अच्छी पार्ट 9 तो पार्ट 9 रे अच्छी आमर पंचायत तो पार्ट 9 रे अच्छी पंचायत पार्ट 11 रे कि अच्छी सो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स सो स्टेट्स और यूनियन भितर जो रिलेशन रही है अच्छी आम पार्ट 11 रे क्वेश्चन देला पार्ट 7 वाज रिपेल्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट तो पार्ट 7 आमर को आर्टिकल सॉरी को अमेंडमेंट द्वारा रिपेल होता बा चेंज कर देता अमेंडमेंट 7 तो 7th अमेंडमेंट जोड़ा कि थिला आमर 1956 से चेंज होता जोटा कि कौन चेंज होता अमेंडमेंट से ना कि 36 अमेंडमेंट कौन था 36 अमेंडमेंट मेड सिक्किम ए फुल फ्लेज स्टेट 42nd अमेंडमेंट को कहला तो 42nd अमेंडमेंट रे आमर कौन ऐड है ना सोशलिस्ट सेक्युलर तापर इंटीग्रिटी ऐड होता जो 1976 42nd अमेंडमेंट ऐड एवं यहाँ को कौन कहती आउ ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहती मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच पार्ट डील विथ यूनियन टेरिटोरीज को पार्ट रे आमर यूनियन टेरिटोरी अच्छी यूनियन टेरिटोरी पार्ट 8 रही आर्टिकल केते अच्छी यूनियन टेरिटोरी जोड़ा अच्छी आमर पार्ट 8 आर्टिकल 239 रू 241 रोज तापर पार्ट 9 कौन कहूँ ना दैट इज पंचायत राज पार्ट 10 कौन कहूँ पार्ट 10 कहूँ आमर एससी ट्राइबल एरियाज सो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 7 कौन कहूँ पार्ट 7 कहूँ आमर स्टेट्स पार्ट 7 में स्टेट्स विषय कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत राज सिस्टम वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट तो पंचायत राज सिस्टम आमर को अमेंडमेंट ऐड होता ना 73rd अमेंडमेंट तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे ऐड होता आमर पंचायत राज तो आर्टिकल केते रही आर्टिकल 243 रु 243 ओ यार आर्टिकल रोच नेक्स्ट क्वेश्चन देला आर्टिकल 243 रु 243 ओ आमर
कौन रिलेट करुँची ना पंचायत राज। तो पंचायत राज ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। म्युनिसिपालिटी केते आर्टिकल अछि? म्युनिसिपालिटीज वर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? तो म्युनिसिपालिटी हमरो को अमेंडमेंट द्वारा ऐड होइतिला? 74th अमेंडमेंट एक्ट जेथरे हमर म्युनिसिपालिटी को ऐड करिथिला 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। आर्टिकल 243 पी रु 243 जे जी डील विथ। तो 243 पी एवं 243 जे जी कौन रिलेट करुछि हमको कौन कहूछि म्युनिसिपालिटीज कौन कहूछि म्युनिसिपालिटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमर पार्ट केते रहछि? पार्ट 9 बी रे अछि। तापर शेड्यूल एरियाज 10 रे अछि जोटा कि आर्टिकल 244 रु 244 ए जाय अछि। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमर 9 बी रे जोटा अछि। सो तापर यूनियन टेरिटरीज हमर केते अछि ना पार्ट 8 रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमरो को अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला ना 96 अमेंडमेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमरो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला जोटा कि 2001 मसीहा रे थिला। एक्ट रे हमरो जो आर्टिकल 21 ए थिला ताको ऐड हेतिला जोते हमरो राइट टू एजुकेशन नामको दिया जाइतिला जोटा 86 तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन कहला जो मिनिस्टर सब रहिबे सेंटर हो कि स्टेट हो से लिमिटेड पोस्ट रहिबो जेटी 91st अमेंडमेंट कहतिला। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन कहला ना हमरो ऐड करथला कोन कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97th अमेंडमेंट एक्ट नहीं करथला। 01 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कहतिला जीएसटी कौन अछि हमरो जीएसटी अछि दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी तार एडिशन हेतिला हमरो 101तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 2016 मसिया रे हेतिला कते 2000 सोसाइटी हमर 97th होछि दैट इज ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। पार्ट 10 रा जो रही से कौन डील करुछि? पार्ट 10 दैट इज पार्ट 10 हमरो कौन डील करुछि दैट इज शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। सो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज ताको डील्स करुछि हमरो पार्ट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देला पार्ट 11 कंटेन व्हिच टाइप ऑफ रिलेशन? तो पार्ट 11 रे हमरो जो रिलेशन रही यूनियन एंड स्टेट्स एटा को प्रकार रिलेशन बोली से पचारि एठी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन रही। तो एग्जीक्यूटिव एवं लेजिस्लेटिव दुटांकर रिलेशन एठी रही पार्ट 11 रे जोटा कि सेंट्रल स्टेट रो रिलेशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स? सो को पार्ट रे हमरो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो रही यूनियन और स्टेट्स भितर से डील करूची 12। सो पार्ट 12 एटी डील करूची हमरो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जोटा कि स्टेट्स एवं यूनियन भितर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 13 इज कवर्ड अंडर आर्टिकल। तो पार्ट 13 रे को आर्टिकल रोज पार्ट 13 दैट इज 301 रु 307 रोज हमरो पार्ट 13 रे। तो पार्ट 13 हमरो कोन डील करूची? पार्ट 13 डील करूची हमरो ट्रेड कॉमर्स इंडिया भितर करिवार। तापर आर्टिकल 243 रु 243 ओ ये पंचायत राज को डील करूची। आर्टिकल 323 ए रु 323 बी ट्रिब्यूनल्स कौन ना ट्रिब्यूनल्स ये ट्रिब्यूनल्स को डील करूची। तो जोटा कि ऐड हेतिला 1976 रे 42nd अमेंडमेंट द्वारा ये ऐड हेतिला जोटा कि पार्ट 14 ए रे रही ना 368। तो 368 डील कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डील कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देला पब्लिक सर्विस कमीशन आर डेल्ट विथ व्हिच पार्ट? तो पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज पीसीएस को पार्ट को हमर डील कला। तो ये पार्ट 14 को डील करूची हमर पब्लिक सर्विस कमीशन जोटा कि आर्टिकल 308 रु 323 रही। तो ये आमर पब्लिक सर्विस कमीशन विषय कहुई। पार्ट 15 कौन कहला? तो पार्ट 15 कहूँ आमको ना इलेक्शन। सो पार्ट 15 आमको इलेक्शन कथा कहूँ। पार्ट 16 कौन कहूँ?
तो पार्ट 16 हमको कहूँ स्पेशल प्रोविजन्स रही शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स दैट इज पार्ट 16 पार्ट 17 कौन कहूँ तो पार्ट 17 कौन कहला ना दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज सो ऑफिशियल लैंग्वेज कथा कहूँ आमर पार्ट 17 नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिब्यूनल्स वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो ट्रिब्यूनल्स आमर कॉन्स्टिट्यूशन एड होती केते अमेंडमेंट रे 42nd अमेंडमेंट रे 42nd अमेंडमेंट 1976 रे ये एड होता ट्रिब्यूनल्सटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन कहूँ आर्टिकल जो 300A आमर थिला जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी थिला ताकू एथिरे आमर कौन राइट टू प्रॉपर्टी को काटिकी आमर 300A रे ताकू मिसा जाइए ऐड करा 44th अमेंडमेंट एक्ट रे तापर देला आमर 52nd अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आमर कौन कहूँ एंटी डिफेक्शन लॉ सो ये एंटी डिफेक्शन लॉ विषय कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देला इलेक्शन एंड इलेक्शन कमिशन आर कवर्ड इन आर्टिकल्स सो इलेक्शन और इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 रू 329 कवर कर नेक्स्ट क्वेश्चन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इज गिवन अंडर व्हिच पार्ट तो एससी एसटी रिजर्वेशन रही है को पार्ट रही पार्ट 16 रही तो हमारा पार्ट 16 कहूँ कौन ना रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट डील विथ ऑफिशियल लैंग्वेज को पार्ट रे हमर ऑफिशियल लैंग्वेज कथा कही ना पार्ट 17 रे कही हमर ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल सो हिंदी हमर जो देवनागरी स्क्रिप्ट रे थिला सेटा गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज को आर्टिकल अंडर रे आर्टिकल 343 सो आर्टिकल 343 रे हमर रही जोटा कि हिंदी गोटे देवनागरी स्क्रिप्ट हिसाब से क्वेश्चन देला व्हिच पार्ट डील विथ इमरजेंसी प्रोविजन्स सो को पार्ट हमर इमरजेंसी प्रोविजन्स संगे डील करूची इमरजेंसी प्रोविजन हमर आर्टिकल 8 सॉरी पार्ट 18 बा पार्ट 18 डील करूची हमर प्रोविजन्स दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन नेक्स्ट क्वेश्चन देला फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी रही से को आर्टिकल रही आर्टिकल 360 रही फाइनेंशियल इमरजेंसी which part is titled as miscellaneous that is part 19 is called as miscellaneous next question the part 20 deal with amendment of the constitutions central state relation part 11 rules election part 15 panchayat raj part 9 next question procedure for amendment is given in the article 368 सो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर था तार आर्टिकल के 368 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 हूँ प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर प्रोसीजर 365 कौन कहूँ ना इलेक्ट ऑफ फेल्यूर टू कंपाइल विथ टू गिव इफेक्ट और डायरेक्शन गिवन बाय द पार्ट 21 डील विथ 21 डील विथ कौन स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन स्टेट्स emergency provisions 18 fundamental rights part 3 directive principle part 4 part 22 covered with तो part 22 कौन कवर कर 22 आर्टिकल 392 रू 395 जोटा कि नेक्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ जुडिशियरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो जुडिशियरी हमर जो अछि यूनियन रो को पार्ट हमर कहूची पार्ट 5 so part next question the finance commission is dealt with under which article which part the finance commission को part रही finance commission part 12 रही हमारा finance commission जोटा कि आर्टिकल 280 रही part 10 कौन कहूँ part 10 कौन कहूँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एरियाज part 11 कौन कहला यूनियन एंड स्टेट्स part 11 कहूँ पार्ट 13 कौन कहूँ पार्ट 13 कौन कहला ना ट्रेड और कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देला इमरजेंसी प्रोविजन आर इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 रे हमर ऐड होछि दैट इज ऑप्शन सी होला राइट पार्ट 15 इलेक्शन पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 19 miscellaneous
नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच पार्ट वाज डिलीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट। तो को पार्ट आमर डिलीट होता 7th अमेंडमेंट रे, दैट इज पार्ट 7। तो पार्ट 7 आमर डिलीट होता 7th अमेंडमेंट रे। तो पार्ट 7 कौन द स्टेट्स कथा कहूँ। पार्ट 5 कौन कहूँ, पार्ट 5 आमर यूनियन कथा कहूँ। पार्ट 6 कौन कहूँ, 8 कौन कहला ना आमर यूनियन टेरिटोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देला ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजन आर कवर्ड अंडर व्हिच आर्टिकल। सो जो ऑफिशियल लैंग्वेज रही से को आर्टिकल अंडर अच्छी, दैट इज 343 रु 351। ऑप्शन बी होची करेक्ट, जोटा कि पार्ट 17 रे अच्छी आमर। तापर तो 324 रु 329 आमर कौन कहूँ, इलेक्शन कथा कहूँ। तो इलेक्शन जोटा कि पार्ट 15 रे अच्छी। 352 रु 360 इमरजेंसी प्रोविजन्स जोटा कि पार्ट केते अच्छी 18 रे अच्छी, केते पार्ट 18। 301 रु 307 कौन कहूँ, 301 रु 307 दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स 307 रे जहाँकि पार्ट आमर केते रोची, पार्ट 13 रोची पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कवर्ड अंडर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल केते रोची ना 243 JH रु 243 JT। तो ऑप्शन बी है करेक्ट। तो 243 पी रु 243 JG कौन हम आमर म्युनिसिपालिटी कोऑपरेशन। 323 ए रु 323 बी दैट इज आमर ट्रिब्यूनल्स 14 ए ट्रिब्यूनल्स। तो 301 रु 307 कौन रहा ना आमर ट्रेड आउ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एंड शेड्यूल एरियाज। तो शेड्यूल और शेड्यूल एरियाज कथा को पार्ट रे कहुई, पार्ट 10 244 और 244 ए। पार्ट 9 कौन आस, पार्ट 9 तो आम पंचायत राज आसो ना। पार्ट 11 कौन आस, पार्ट 11 आमर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 12 कौन आस, पार्ट 12 तापर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया। पार्ट 13। तो पार्ट 13 आम ट्रेड और कॉमर्स कथा कहूँ। तापर पार्ट 10 रे कौन कहला, पार्ट 10 रे कौन कहूँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एरियाज। पार्ट 11 कौन कथा कहूँ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड टेरिटोरीज यूनियन एंड स्टेट्स कथा कहूँ। पार्ट 11। पार्ट 12 कौन कहूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इलेक्शन आर डेल्ट विथ विच पार्ट। इलेक्शन हूँ पार्ट 15। तो 15 रे रही आम इलेक्शन। पार्ट 16 रे कौन कही, पार्ट 16 डील विथ, पार्ट 16 कौन कहूँ डील विथ आमर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। पार्ट 17 कौन कहूँ दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 कौन कहूँ इमरजेंसी प्रोविजन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन। सो डीपीएसपी आमर कैन नॉट बी जस्टिसेबल। तो जस्टिसेबल हो पार ना कहीं एमारे को अंडर आसने पार्ट 4 अंडर आसुँच। ऑप्शन बी है करेक्ट। पार्ट 3 कौन ना फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 5 रे कौन दैट इज यूनियन। पार्ट 6 रे कौन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच पार्ट डील विथ सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। सो को पार्ट रे आमर सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट कथा कही, पार्ट 14। तो पार्ट 14 रे कही तो ये आमर यूपीएससी एवं पीसीएस कथा कही। तो ये आमर ऑप्शन हम करेक्ट। पार्ट 15 कौन कही इलेक्शन कौन आमर कही कथा कही। पार्ट 16 कौन कही आमर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तापर पार्ट 17 कौन कही आमर ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन शॉर्ट टाइटल एंड रिपेल प्रोविजन आर इंक्लूडेड इन। तो जो शॉर्ट टाइटल और रिपेल रहा से को प्रोविजन रे इंक्लूड अच्छा को पार्ट रे, पार्ट 22। सो पार्ट 22 रे से इंक्लूड अच्छा। तो पार्ट 21 कौन, तो पार्ट 21 कौन टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन। पार्ट 20 कौन कौन ना आमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
पार्ट 19 कौन कौन दैट इज मिसलेनियस, इट इज मिसलेनियस।